हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। गाइस, मैं आज इंग्लिश का एक सेक्शनल मॉक दूंगा, क्लर्क लेवल का, स्मार्ट कीडा मॉक का। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शनल में क्लर्क प्री इंग्लिश पहला मैंने दिया हुआ था गाइस, और मैं आज सेकंड दे रहा हूँ। नॉर्मल मोड। Below there are 5 words given in the bold, and each of these words is different letter. For each word you are given option. You have to find out which among the option best replaces. Okay. Although this is one of Tina's rules of improvisation, it can also indicate to sign. It can also refer, incline, imply. It can also imply to signs, क्योंकि बाकी जो verbs हैं इसे तो थर्ड फॉर्म आना चाहिए था, implied, applied. It can also indicate to signs. Indicate मेरे ख्याल से no change होना चाहिए फिर. It can also refer to signs. It can also refer, no change करता हूँ. There are many inventions that we take for remark today that were born from mistakes, or to use a more positive phrase, happy accidents. That invention that we take for granted. Most people are customized of the story about the discoveries of penicillin, but others are less known fact. Most people are clear of the stories, aware of the stories. For example, the concept behind the thermal inkjet printer was discovered by accident when an engineer rested a hot fusion ion on a syringe which held ink. Rested a hot soldering ion on a syringe which led. इसमें डाउट है पर कर दे रहा हूँ. Such happy accidents are continuing and are likely to continue into the future and are likely to happen. Are continuing and are likely to continue into the future. Continue भी गलत नहीं है वैसे तो. Likely to continue. No, there have been far too much too much. As a writer who seems endlessly delighted by children and their world. Bond writing is real, often relaying the gloomy ideas about loss and loneliness. As a writer who seems endlessly delighted by children and their world. Bond writing is real. बॉन्ड ये रक्सिन बॉन्ड है, ये बॉन्ड एक राइटर है. बॉन्ड राइटिंग इज रियल, ऑफन रिलाइंग द ग्लूमी आइडियाज अबाउट लॉस एंड लोनलीनेस. A home cooked meal may be sweet or salty, would be many times healthy and better. healthier comparison आएगा. Unfortunately, it later came to his mind that an authoritative regime would bring in tons of money, so he persuaded President to let Hitler come to power. It later came to his mind that an authoritative regime would bring in tons of money, so he persuaded President to let Hitler come to power. Tons of money, lots of money होना चाहिए, इसको मैं छोड़ रहा हूँ. All high performance athletes who carry the sport in their own bodies still need to have a close medical follow-up to avoid any kind of complications. High performance athletes who carry the sport in their own bodies still need to have a close medical follow-up.
Aren't I old enough to start being an undergraduate? Aren't I idioms? Aren't I long into the tooth? Loose cannon to start. C. B है कि long in the tooth. Icing on the cake तो नहीं है. With her term paper due on Monday, she was in a hurry to finish it. She was in a field. She was racing against the clock. Cooking is a very easy task for my mother while I am not an expert. It's a piece of cake. It is something of a fishy and consuming state that looks susceptible to legal inquiry to you. It is something of fishy and consuming state. It is something Herculean task तो नहीं आएगा. डैम स्क्विब हो सकता है या मेयर्स, इसका मुझे आइडिया नहीं है. The people in the village disapproved of the new and inexperienced doctor. हाँ, greenhorn as hard and fast doctors. As green as grass. As green as grass मतलब clear है एकदम. Disapproved of the greenhorn doctors who were posted in the village after completion of the hard and fast doctor आएगा. हाँ, hard and fast doctor या BC पता नहीं क्या है इसमें. ठीक है, इसको तो हम बाद में करेंगे. The following two statements are given in the connectors. You have to select both the option which would connect both the sentences and make them grammatically correct. Kindly note the sequence of the sentence must not be changed. Okay, he lived through this era. So many of his friends died in racing accident. Whereas he lived through this era, whereas so many of his friends died. Her daughter Elise is still missing. She goes to the police station on a daily basis. Her daughter Elise is still missing. However, she goes to police station. However, then therefore हो सकता है. Therefore, she goes to police station on a daily basis. He bought his brother to live with him. He gets a company himself, so that he gets a because he gets a company himself. क्या है ये? रिप्लेस करना है हमें. Which of the following words should replace each other? Okay, lacking a principal provocation on speech and a single-mindedly chasing engagement and revenue. Facebook gave free play to Donald Trump's engagement. Lacking a principal engagement on speech and single-mindedly chasing provocations. Trump's provocation आएगा, लास्ट में A आएगा. CBA chasing speech. ये आएगा. In being upfront about mental health struggles, the athlete may have touched a chord with many in this pandemic scared world. No rearrangement. The decentralized interference of the blockchain make cryptocurrency immune to the old ways of government control and nature. Nature आएगा पहले में. The decentralized nature of the blockchain makes cryptocurrency immune to the old ways of government control and interference. So CBA. By having a closer, you are one step closer आएगा. B में आएगा A की जगह. And it makes it way easier to maintain. तो BAC. चलो अब हम करेंगे RC. Which of the following is the nearest synonym of the word augmentation as given in the bold? Augmentation. Due to the augmentation of global population. Augmentation यानी increment.
अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन. ठीक है, पढ़ना पड़ेगा इसमें. और देख लेते हैं सिंगल लाइन की कोई हो तो. नहीं है, पढ़ो चलो. The depletion of natural resources occurs when resources are consumed at a faster rate than that of replacement natural resources. According to the passage, which of the following terms are related to natural resource depletion? Okay. Natural resources are those resources that are in existence without human action, and they can either be renewable now. And when it gets down to the mention of natural resource depletion, the term used in references are water usage, farming, fossil fuel consumption, fishing, mining. Fishing और mining तो मिल गया. हॉस्पिटैलिटी नहीं है ना इसमें, और हो भी नहीं सकता. 1-3. Which of the following statement is true according to the passage? Only a small number of people are devoid of access to clean water due to deforestation. As per EIA, remaining oil will last for next 30 years. Next, nearly half of the world's natural forests are already cleared. ठीक है, देखेंगे हम इसको आगे. A resource that is rare on Earth due to depletion has a higher value than a natural resource which is in abundance. The level of natural resources degraded also increasing. Consequently, the world's eco footprint is estimated to 1.5 times the ability of Earth to sustainably provide each individual with enough resources. Okay. The total global population is more than 7 million people. Still, there is a consistent increase in overall population, and this has been a critical factor in extreme depletion. As an increase in population expands the need for resources and condition as sustainable. In addition, it contributes to increase researchers further indicate that developing countries are using more and more resources to industrialize and support their ever increasing population. Hence, the depletion of natural will continue as long as the world increase. Humans are causing a lot of stress to the land reserve due to the over reliance on food production for daily. Poor irrigation practice, for example, is a key contributing factor for salination and alkalinization of the soil. Poor soil management practices and the use of heavy machinery and farming equipment also distinguish ठीक है. An increasing population and modern anthropogenic activities is a major contributor to the disposal of pollutants. The soil, air, lakes and seas are being contaminated with sewage, radioactive materials and toxic chemicals among other pollutants. और भी है क्या? अरे राम, क्वेश्चन ही भूल गया क्या पढ़ा था. विच इज ट्रू है. ठीक है. ऑयली, हाँ. पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, डिफॉरेस्टेशन, पॉपुलेशन, मेजर कॉज ऑफ वाटर कंटेमिनेशन. इतना 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 इतना. एज ऑफ टुडे अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन पीपल लैक एक्सेस टू क्लीन वाटर बिकॉज ऑफ the effects of deforestation and contamination of water resources and groundwater. Water shortage further contributes to famine. ठीक है, उसमें 1 बिलियन बोला है और इसमें क्या बोला है? ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल आर डिवॉइड ऑफ एक्सेस ऑफ क्लीन वाटर. तो ये पहला तो गलत है, हटाओ. ये तो या तो सी होगा या बी होगा. अब आगे पढ़ो. एज पर ई आई ए ये रहा. Oil is the non-renewable resource that accounts for approximately 40% of total energy used globally. As researchers by ITNA had shown that due to high rate of oil exploitation, the amount of oil remaining would last for only 25 years. जबकि यहाँ दिया है 3, तो only 3 होना चाहिए. But none of these है, तो एक बार ये भी चेक करना पड़ेगा. Nearly half of the world's natural forest are already cleared. कहाँ था? हाँ. ऑयल इज एज कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग, प्लांटिंग एंड डिप्लीशन विद डिजास्टिंग दैट इफेक्ट्स ऑयल इंक्लूडेड इन इतना. अप्रॉक्सीमेटली कितना बड़ा पैसेज है? अप्रॉक्सीमेटली 18 मिलियन एकर्स ऑफ फॉरेस्ट कवर आर डिस्टर्ब्ड एनुअली. दिस मीन्स दैट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स नेचुरल फॉरेस्ट कवर हैज ऑलरेडी बीन क्लियर्ड. नियरली ऑलरेडी बीन क्लियर्ड. ओके, नंबर 3 इज करेक्ट. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, आर द मेजर कॉजेज ऑफ वाटर रिसोर्स डिप्लीशन. वॉट आर आना चाहिए ना, क्वेश्चन में ही रॉन्ग है. वॉट आर द मेजर कॉज ऑफ वाटर रिसोर्स डिप्लीशन? वाटर का डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, एक तो यहाँ देखा था मैंने. कहाँ गया? पुअर फार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, पॉपुलेशन आर द मेजर कॉज ऑफ वाटर रिसोर्स डिप्लीशन. तो डिफॉरेस्टेशन है, पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी है, पोल्यूशन भी है, ऑल आएगा. According to the passage, in which of the following areas oil plays a role of an essential commodity? Oil का passage ये रहा. Oil is an essential commodity in manufacturing, planting and mining, transportation among many activities. Manufacturing, planting and mining. Tourism नहीं है, तो नंबर 3 के अलावा
ये रहा. According to the passage, which of the following can be termed as adverse effect of oil depletion? Oil depletion. Oil depletion मतलब ये the अरे यार ये लैपी को क्या हो गया. The adverse effects of oil depletion include the fall of the business, high cost of living in developing countries, and uncertainty in transport sector. Uncertainty फोर्थ तो है. डिक्रीमेंट इन जीडीपी की बात नहीं हुई, ड्रास्टिक चेंज इन एफडीपी की बात नहीं हुई है, तो पहला और फोर्थ है, फर्स्ट एंड फोर्थ. अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स आर एम्ड एट चेकिंग अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन. ये बात के पैसेज का है, यह पढ़ना पड़ेगा अब. प्रोग्राम्स लास्ट पैरा में, हाँ प्रोग्राम्स एम्ड एट चेकिंग अगेंस्ट सच एज REDDD created by World Bank, the New York Declaration on Forests and United Nations are initiatives that could help reduce the depletion of natural resources. This initiative may also act as incentive for गाइस ये मेरा है ना स्क्रॉल वाली माउस चल नहीं रहा सही से. हाँ अरे प्रभु चल ले. This initiative for encouraging general public to conserve forests as these are the habitat and products of ठीक है. चेकिंग अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन तो नहीं दिया हुआ है ना यहाँ पे. डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स के बारे में दिया हुआ है, तो RED वर्ल्ड बैंक तो नहीं होना चाहिए. ओनली 3 है कहीं. दिस इनिशिएटिव अरे दिस पढ़ने नहीं देंगे. दिस इनिशिएटिव में ऑल्सो एक्ट एज इंसेंटिव फॉर एनकरेजिंग जनरल हैबिटेट एंड प्रोटेक्टर ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड्स यूनिक प्लांट एनिमल. इतना this is depletion incentive for encouraging general public to conserve forest as these are conserve forest. ठीक है, ये डिफॉरेस्टेशन के लिए हो जाएंगे, पर इसमें यूनाइटेड नेशन नहीं दिया हुआ है, मतलब रेड और वर्ल्ड बैंक की है. ऊपर से लैपी भी नहीं चल रहा है सही. चलो यूनाइटेड नेशन मुझे कहीं दिखा नहीं है, तो ये लग रहा है मुझे. अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन है, इंक्रीज फ्लडिंग है, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस का पता नहीं चला मुझे, कहीं मैंने पढ़ा नहीं और ये मुझे पढ़ने देगा नहीं लैपी. सॉइल इरोजन, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस इज लीडिंग ग्लोबल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीज फ्लडिंग आ रही हैं. अब ये 14th कौन सा था. गाइस देखो एरर में तो मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन करने पड़ते हैं अटैम्प्ट, क्योंकि फिर अटैम्प्ट होंगे नहीं ना पूरे. देखो अब इसमें मुझे लगता है ये पहले वाले में भी कुछ गड़बड़ लग रही है. ऑल्दो दिस इज़ वन ऑफ द टीनास रूल्स ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, इट कैन ऑल्सो इंडिकेट टू साइंस, इट कैन ऑल्सो इम्प्लाई टू साइंस, इट कैन ऑल्सो बी होना चाहिए था यार, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी. ये तो नहीं होगा. अनफॉर्चुनेटली इट लेटर केम टू हिज माइंड दैट एन ऑथोरेटिव regime would bring in tons of money, so he persuaded president to let Hitler come to power. Bring in tons of, सही लग रहा है वैसे, नो एरर लग रहा है मुझे. कर दूं, कर देता है. ये तो पता ही नहीं है मुझे. गाइस कर तो दिया है मैंने, अब देखते हैं क्या है. सबमिट करता हूँ. मार्क्स आए हैं. 20.25, एक्यूरेसी 75.86, मतलब बहुत गलत हुए हैं. और परसेंटाइल 95 है, इससे खुश हूँ. चलो 7 गलत हैं, देख लेता हूँ कौन से गलत हैं. एरर के ये पहला गलत है, इम्प्लाई होगा. दिस ऑल्सो अप्लाइड. यार इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी क्या.
खैर छोड़ो, मैं बाद में देखूँगा इसको। सी इसमें एरर एरर की देखो, दो दो एरर की रॉन्ग हो गए। ये ईडीएम टाइप है, इसमें आइडिया नहीं था मुझे भी, सही बताऊँ तो। हार्ड एंड फास्ट नहीं, बोथ बी एंड सी। ये ईडियम्स हैं, इसके नॉलेज होनी चाहिए, आपको पढ़े हुए होने चाहिए। इसमें दिक्कत हो रही थी बहुत। और ये कौन सा है? बी सी ए। ओके गाइस, वैसे भी इंग्लिश में एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी देखिए, आप परसेंटाइल 95.32 है, जो कि ठीक है, मेरे हिसाब से सही है। और मार्क्स भी 20.25 हैं आउट ऑफ 30। इट शुड बी अबाउट 25, पर ठीक है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय।